Okay, so uh, yes, are you watching my screen? Yes. Okay, so welcome you all. This is our seventh lecture, and now we are starting our new model. In this model is regarding distillation. The title of module is distillation, but actually we can call it separation. Separation with the phase separation operation. So but we will do these 13 tutorials. So 1 to 12 are in series, and one last one is 16th tutorial. Basically, in this tutorial, we will use a couple of operations and understand those operations for our core operations of separations like distillation, absorption, liquid extraction, and so on. Okay, but very first or fundamental and very big domain of those operations is distillation. Distillation is comprises, I think, 80% of the separations which are occurring or happening in the industries. So what is distillation or what we meant by fractionating distillation column? What are the sections? I hope we have already studied these things in our usual undergraduate classes, but to make the knowledge very much equal or at a normal level, I am interested to show you this graph. So let me admit Mr. Okay, okay. So this is our fractionating distillation column. I hope you all are watching. This column is basically fractionating distillation column means the separations is being conducted in the fractions at various stages. The feed stream is entered in the column at some stage. This stage, the number of stage is very much critical to define. We can insert the feed stream at appropriate level so that we can get the optimized separations. These lines are called these stages. Uh, each stream is coming on any stream are in equilibrium, but when they are leaving, they are in equilibrium. Okay, there are two flows maintained in the column. One is from top to bottom liquid flow, and other is from bottom to up vapor flow. Okay, where the feed stream is entered, it is called feed stage, and below this on the section is called stripping section, and above the feed plate we call it rectification section. Okay, sometimes these distillation columns are also called strippers in our routine industries. Anyway, stripping column or distillation column is one is the same thing. Vapors are the top stage. When vapors are coming out from the top stage, they need to be condensed to get the product in a liquid form. So we have three fashions or three styles to get the product. One is complete condensation of the vapors, and we get the product in a complete liquid form. Sometimes we need partial liquid and partial vapor, so accordingly we operate the condenser in that fashion. Okay, the condensed amount of the product, the portion of that should be recycled, which is called reflux. This reflux and its rate are very much important. We need a pump, which is what is usually called reflux pump. Okay, so in this way we have maintained we maintain the liquid flow showering from the top till bottom. And similarly, from bottom, the liquid is first sent to the reboiler, where we use some medium for energy inserting, like steam. The vapors are generated here. Those vapors are again fed back into the column so that the vapor flow is maintained from bottom to up. And a portion of this liquid
is taken as a product, bottom product. So we have one is a feed stream and other is overhead product and bottom products. The streams are our overall input and output streams of the this fractionating distillation column. Though this fashion is could be repeated at various stages, so this is multi-output products are possible. Now you can see here, feed is usually not inserted directly in the column, but often for making some economic enhancement, this feed is recirculated from reboiler or some other heat exchangers in the process so that it gets some energy or to reduce the overall duty of the reboiler. Anyway, so this is a fractionating distillation column. This is how it works. There are several things which need to be defined. For example, how many number of stages are there? We need to calculate. Several methods are available in the literature, and at which particular stage the feed is should be inserted, or what are the reflux ratio. Now, this reflux ratio can be defined one of the several ways, like how much amount of the overhead product, total overhead product to the vapors is to be refluxed, or how much amount of the this liquid is to be refluxed as compared to the ratio of the feed, or the product to the liquid transfer. So several uh, ratios can be defined in terms of liquid ratio. Anyway. So let's this is I think a little bit basic about the fractional distillation column, and now we can see that what are the things in our tutorial. So our first tutorial is uh, in the distillation. Our first tutorial is C2 splitter, ethane splitter basically. C2 splitter. This is our first tutorial. Basically, this tutorial is the main objective of this tutorial is to understand the RadFrac tool, which is used for the distillation and absorption and other things. RadFrac is a tool which is very common and oftenly used for these type of operations. So in this tutorial, we understand that what are the consequences, how this RadFrac is basically modeled, what are the basic parameters of the RadFrac, and what other options are available to model this RadFrac. RadFrac is a rigorous absorption distillation fractionating column, basically. So RadFrac is a very famous name. Those who are working in ASPEN Plus, they know this name as a very fundamental name, RadFrac. So this tutorial basically whatsoever the task would be, but the main aspect of this tutorial is to understand this RadFrac fundamentally. And What does then this column, stand for? basically this red is separate and this is a fraction. Rigorous absorption distillation fractionating column. Uh, Sometime we only say rigorous fractionating column. This AD, absorption and distillation. In literature or in a what you call it, it's a manual. They are not defining their acronyms, or but the frac means fractionating column, and R is for rigorous. This is confirmed. Anyway, and then some other things, how you develop the column profiles and custom stream results and this and that. Okay, so what is the objective of this tutorial is ethylene is an important monomer and is made from ethane. So ethane से ethylene बनती है. The conversion of the reaction is not perfect, so ethylene must be separated from system. Uh, this ethylene is usually produced from ethane, and ethylene is very important monomer. But in the reactor, we may find some sort of ethane, unreacted ethane as well. So we have to separate out both things so that we can get the pure ethylene. Ethane and ethylene are molecularly similar and so are difficult to separate. The difficulty of separation is compounded by the fact that the polymer production requires extremely pure feedstock.
ठीक है ना, ये सेपरेशन की नीड बता रहा है बेसिकली। एनीवे, प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रीम कंटेनिंग 68.58% of ethylene with a total flow rate of 7.3 million pound per day is fed into a distillation column consisting of 120. Now, in this particular tutorial, the stages are given, but sometime in upcoming sections, you need to calculate this. It is desired to produce a distillate product from stream containing a minimum of 99% weight percent ethylene with a total molar flow of 5 million per pound per day. It is desired to that the bottom of the product contains no more than 0.1% ethylene. ठीक है, इथाइलिन जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू इथेन, सो इथाइलिन वी विल गेट more volatile components from distillate side, means upper side. They said that 99.9% ethylene should be pure from distillate, and not more than 0.1% ethylene should be wasted in our bottom product. सो डिटरमाइन इफ इट्स सेपरेशन फीजिबल। हमारा इस ट्यूटोरियल का टास्क ये है कि क्या ये पॉसिबल है, ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये बन सकता है। सो अजम्पशंस हैं कुछ, 100% रे एफिशिएंसी, टोटल कंडेंसर। अच्छा, ये टोटल कंडेंसर जब हम आएंगे तो हम आपको बात बताएंगे। 300 psig कॉलम प्लेटिंग, few things which are required for the convergence of the this red frac in this module need to be assumed here, and then we will start. Okay, so we are starting. We have our uh, just a minute. We have our software. We are starting our new case. Now we have to define our ethane and ethylene. So you can see that ethane and ethylene, C2H6 and C2H4. So next is we have to define the method, which is nothing but the Peng Robinson. And then we need to run the property package so that the tables are usually calculated. Okay, so now we have defined the fluid package and the streams. Now you can go in simulation. Okay, so when you go in columns under the tool palette, so you will find several options available in this. So we have several options. I think 3, 4, and 4, 8 total tools are available. They have different capabilities, but the very famous is RadFrac. If you hover the mouse on this, then it says that this is a rigorous 2 or 3 phase fraction for single columns, models, absorber, stripper, etc. So fraction 1. Okay, there is another one is distillation. This is a shortcut distillation, and some other things are there. Shortcut distillation is a little bit different as compared to red fraction. So red frac, we keep this, and we can say C2 split as per tutorial. Tutorial is saying that you can put any name, but they inserted C2 split name. Okay. So now this is our symbol of distillation column. Now this distillation column has two exchanger type things. One is a cooler, which is reflecting the condenser in the top, and another is the heat exchanger or heat exchanger, which is showing us the reboiler. Now, when you click on the material stream and hover the mouse in the flow diagram space, you will find that one red stream is which is going to insert in the column is shown, and two red samples or arrows are the output from the condensing section or distillate side, and one red arrow is coming out from the reboiler side. So
you need to define, you have to insert one feed stream. So you call it feed. And now here we have options. We have options of either we would like to get the product in a liquid form or in a vapor form. So if we have liquid form, so we can say this is our distillate, or we can say this is our ethylene, and we have other as bottom product, which is called ethane. Okay, so if you take picture, okay, so this is our required flow diagram. You can see we have inserted a feed stream and we have two outputs, ethylene and ethane. So definitely we need to define something. Now, one is the stream. We need to define completely the feed stream. Now it says the feed stream has this data, which is given by the tutorial. One is its vapor phase fraction and pressure specifications are set. And this is 350, not bar, but actually need to change the PSI in unit is PSI G. PSI G and 350. Vapor phase fraction is 100% vapor. Feed is in a vapor form. And this is mass flow rate. You need to change mass flow rate, and this is pound per day. Pound per day. And 7.310 versus 6, because it's a million, 7.3 in 6, 7.3 million pound per day. And mass fraction in the feed stream, we have two substances, ethane and ethylene. Ethane mass fraction is 0.315 and 0.685. Remember, the total sum of these two streams or whatsoever things are here, the total should be 1. Okay, feed stream is completely defined. Then obviously we next is we have to give some data to the our RadFrac column. So we double click this. So we will reach at our input sections. We have to define at least three um, tabs. One is a configuration tab. Now calculation is type. We have equilibrium based or rate based. So later on we will discuss on this that what we mean by equilibrium. It means the equilibrium state calculations theory is being applied, and each streams are in equilibrium. Otherwise, you have another option of calculation is rate based. So it is a mass transfer rate based, means this is not on the basis of equilibrium. So by default, this equilibrium is okay. Now number of stages. That's for tutorial. It is 125. You can change and you can see the things. Now here, condenser type, we have multiple options here. Condenser, total condenser, and partial vapor, and partial vapor liquid, and none. So by default, we usually set a total condenser. Total condenser means that total condenser liquid distillate is at a bubble point. Means we have condensed all the uh, vapors, and now we have our product is also in a liquid form, and it is in a at a bubble point. Okay, so we reduce the temperature up to such point that the vapors are just converted into liquid. So this is total. Now you have other options like what is the special type of the reboiler. Sometime you have a kettle, thermosiphon. Kettle means normal reboiler type. This kettle, if you hover this might, then a little help kettle internal or once throw reboiler. This look like a reboiler, and reboiler, and valid phase, vapor liquid, and convergence is standard. So
we have only selected the condenser type, and we have given the appropriate number of stages. Now here operating specifications, these are the setup options and the operating specification. Now in operating specifications, we need to define at least two things. In HISIS, you have to define these specification by yourself. Here also we have some sort of methods, but here they have given our some fixed things like how many things you can set among these two provided options. We can choose any one from this list and then remaining one from the same list, but you have to set any two things from this list, one in this column, another in this column. So this depends which particular type of information you have or you have assumed. For example, they are saying that we have a distillate to feed ratio. It is given in a pound style, but they have back calculated and they said that the distillate to feed ratio is should be 0.6849. It means that 68% of the distillate is must be available by inserting 100% feed. So this is like this. So this is distillate. This is we cannot distillate. Distillate means how much amount of distillate we would like to get. But it is a distillate to feed rate, and it is in a mass ratio, mass units 0.684932. 0.684932. Another is a reflux ratio, and it is in a mole, and it we have to define 4. So this reflux ratio says reflux rate per distillate rate. How much amount we are feeding back to the overall distillate. So we can say 4 moles, pound moles are being fed per 1 pound of the distillate. Total output, it means total output from the vapor side is 5 moles. So we inserted 4 moles back and we get 1 mole as a distillate. So 4 by 1. So you can change this and you can see that what is the effect. Anyway, Don't we express this ratio in the same units? yes, because otherwise they will mismatch. The ratio is No, but same. you're saying here it's moles per mass, so it should be Yeah, moles per moles. these two could be any units. You can change the units, doesn't matter. This is a distillate to feed rate, and it is I think given in some way in the tutorial. It is also given in some way. It says that it is desired to produce a distillate product stream containing minimum this ethylene with a 5 million pound per day. So if you see total feed is 7.3 million, and we would like to get 5 million pound of the distillate. So this is distillate to feed rate. So 5 divided by 7.3, we will get this rate in the mass form, 0.684 something. And this is another thing. This is said that how much you are feeding back your from the distillate, how much amount of this should be fed back. So it says 4. It says it is 4. Now we have to see ये जो रेशो हमने अभी कैलकुलेट किया ये तो टोटल था, लेकिन उसमें से भी हम 4 मोल वापस कर रहे हैं। ये तो हमने अज्यूम किया था, ये जो रिफ्लक्स रेशो है इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया। इन्होंने अजम्पशंस के बाद आप इफ यू रीच एट दिस, so it is no assumption here, but they have one case, I think, 4 moles. So you can change this information and you can get the different results even. That means at the moment, this means that you are putting back 4 moles of the distillate per Hmm. mole of the feed, or it so. No, this is reflux ratio. Now, reflux ratio is they are now in the literature or in the study, there are two kinds of reflux ratios are being applied. One is RD and other is RV.
RD is, which is most common, is RD is what amount of this this stream in the molar mass form and divided by the distillate out. And RV is amount of this stream divided by the total vapors coming out, RV and RD. So hey, they are saying in this if you hover in the mouse in the reflux ratio, they said reflux rate divided by distillate rate rather than vapor overall vapor rate. They said distillate rate. So it means 4 moles. 4 means 4 upon 1. It means 4 moles of reflux rate divided by 1 mole of distillate rate. So they are getting 4 moles. I mean, total moles from there are 5. 4 moles are going to feedback, and 1 mole is in a distillate. So this is a 4 by 1 or 4 reflux ratio. You can change. Okay. Okay. Right. ओके इसी ट्यूटोरियल में आगे चलकर एक बहस करेगा और वो बहुत बहुत जबरदस्त होगी इस रिफ्लेक्स रेट और कॉलम इंटरनल्स पर एनीवे ओके स्ट्रीम्स इफ यू गो इन स्ट्रीम्स sorry. Now this is our configuration is clear. Now we are going in our stream. This is the second thing, and we need to define that where is your feed location, feed plate location, or where feed is inserted among. Okay, एक चीज यहाँ पर ये देख लें कि यहाँ पर जो टॉप स्टेज है कंडेंसर इज फर्स्ट स्टेज और टॉप स्टेज एंड numbering is going from 1 2 3 from the top. So it says the ethylene stream is coming out from the stage 1, which is condenser stage. Ethylene is a stream name. You see, this ethylene stream is actually coming from the one stage. One stage is nothing but the condenser stage, and and it says this ethane is coming from 125, which is nothing but the bottommost stage. 125 ethane. So, where you want to place your feed. Now, in actual mathematical calculations or by McCabe-Tide method, you actually calculate exact location. But here in the tutorial, they said some value for this, and it is nothing but next to go to stream and intercom. In this case, it's specified stage number 90. Now, frequently asked question, useful option to know convention for stage numbering. The number convention in ASPEN Plus is that condenser is stage 1 top with the stage numbers increasing down the column. ये एक इन्होंने fact लिख दिया है ASPEN Plus का, ये हमेशा इसी तरह चलेगा. So you need to define this location also uh, put some critical issues on the calculations as well. You can change and you can see the results. Okay, then you have last thing is pressure specifications. It says that stage 1 is pressure is 300 psi. Now you will see three things in pressure. One is your view is top to bottom. Okay, so top stage or condenser pressure you put 300 psi pressure. Now if you put psi. Okay, now if you inserted some information like pressure drop information here or the pressure stage 2 pressure, so it will be inserted accordingly and it will calculate how much pressure drop is there. But if you have not filled any value, it assumes that there is no any pressure drop and the column is this 300 psi become the operating pressure of the column. It is also mentioned here. It says for this problem, we will assume that there are no pressure gradients throughout the column. If no pressure drop is entered into ASPEN plus, the top stage pressure will be assumed to be the operating pressure of the entire column. Note that in real life situation, there will be pressure drop throughout the column. So you need appropriate pressure drop information here if you are going to insert the real simulations or developing the real simulation. Now, so far, we have inserted the basic requirements of the RadFrac block,
which is we named as C2 split. So we can close this. Doesn't matter. You need to run this. So when you click on the run, and if each and every information is okay, then you will find there is no any error, and you will find that it gives the results. Usually it does not take such time, but um, sometime we have a software crash could happen. Okay, वो पीछे चल रहा था एक सिस्टम. I think it is not working. Okay, so I need to end task this. Okay, very quickly, I am creating again, and we have a couple of questions. Okay, so ethane, ethylene. Okay, next, and Peng Robinson. Next. पहले वाले सेपरेशन सारी खत्म हो गई. वो कभी कभी आप खोलते हो तो आ जाता है कि आपने सेव नहीं किया था, अभी मेरे पास नहीं आया. इत्तेफाक हो गया ये. Okay, so you go in columns, RadFrac, C2 split. Okay, so maybe जब हम सिखाते जाते हैं तो हम कुछ चीज़ों को बताने के लिए करते हैं, तो वो जो है वो so there's nothing but the vapor phase friction. The pressure should be in PSIG, and I need to relocate the just two things need to define. One in the feed stream, 350 PSIG. Okay, 350. And all this is a mass fraction. We have 7.3 e raised to 6. And we have mass fraction 0.315, 0.315, 0.685, 0.685. Okay, and other is our block information, equilibrium, 125 stages, condenser is total. This is your distillate to feed rate. This is in mass, and it is 0.684932. 0.684932. 4932, and it is reflux ratio. It is like 4 streams. Stream 90, and it is 300 PSIG. 300 PSIG. Okay, so we need to run this. It has calculated now. So अब इस ट्यूटोरियल में एक मिसमैच है. मैं एज पर आई 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 थिंक इट इज जो हम यूज कर रहे हैं वर्जन इशू.
ना इट सेज, यहाँ पर वो कह रहा है कि आप क्रिएट करो कस्टम को स्ट्रीम रिजल्ट्स। ये क्या कह रहा है? बेसिकली देखें, हम जब भी ब्लॉक्स बनाते जाएंगे आगे चलकर हम बड़े बड़े सिमुलेशंस बनाएंगे। अभी हमारे सिमुलेशंस में सिर्फ एक ब्लॉक इंसर्टेड है। ब्लॉक मींस जो भी यूनिट ऑपरेशंस हैं, तो एक ही ब्लॉक है, वो उसका नाम है C2 स्प्लिट। अगर हम मल्टीपल कॉलम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। और इसमें इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें, स्पेसिफिकेशन हमने पहले इनपुट, कुछ हमने इनपुट बताया, स्पेसिफिकेशन बताई, कॉन्फ़िगरेशन नहीं। और फिर जब हमने रन किया तो ये रिजल्ट्स, प्रोफाइल्स, स्ट्रीम रिजल्ट्स जो है ना वो आ गए। ठीक है ना, ये तीन चीज़ें जो है ना थोड़ी इन्होंने मॉडिफाई की हैं आई थिंक, क्योंकि हमारे पास 7.1 वर्जन नहीं है। और इन्होंने थोड़ा फोटो भी इस तरह निकाला है, ये जो अगला फोटोज है इसमें हम देख नहीं पा रहे कि इनके क्या है, किस चीज़ को क्या है। ये असल में कह रहे हैं कि आप ब्लॉक्स में जाएं, सी स्प्लिट में जाएं और स्ट्रीम रिजल्ट कस्टम में जाएं। और राइट क्लिक करके डिफ़ॉल्ट और उसमें एक नया टेब डालें और अकॉर्डिंगली आप जो है ना वो आप अकॉर्डिंगली जो है ना वो आप इसको कुछ स्ट्रीम्स को कर रहे हैं। बेसिकली व्हाट दे वांट, उन्होंने अब नए वर्जन में जो है ना खुद ही सेट कर लिया है ये काम। पहले शायद ये होता था कि हम जो है ना रिजल्ट जो रिजल्ट्स देखना चाहें या जो जो उनकी प्रॉपर्टी देखना चाहें वो ऐड करते जाएं। इन्होंने क्या किया है कि अब रिजल्ट समरी में या स्ट्रीम्स रिजल्ट्स में ही इन्होंने स्ट्रीम्स सारी दे दी हैं। यानी कि बेसिकली मटेरियल हमारे पास फिलहाल मटेरियल स्ट्रीम्स ही हैं, कोई एनर्जी स्ट्रीम्स वगैरह, हीट लोड वगैरह हमने नहीं फिलहाल कैलकुलेट किया। और इसमें जो भी कंसर्न्ड प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें है। मिसाल पर मैं ये देखना चाहूँ कि ईथेन का मास फ्लो कितना आया, तो ये ईथेन का मास फ्लो, ईथेन मीन्स बॉटम और इथाइलिन मीन्स ये, इन टर्म्स ऑफ जो है वो आपका इतना आ रहा है मास फ्लो। टोटल मास फ्लो आ रहा है किलोग्राम पर आवर में 5⁻⁶ मिलियन। ठीक है ना। आप इनकी कंपोजिशन देखना चाहें, मोल फ्रैक्शन देखना चाहें, तो ये देखें इथाइलिन साइड पर, ये जो इथाइलिन स्ट्रीम है उसमें 99%, 99.9% जो है ना वो, सॉरी, इथाइलिन में 99% इथाइलिन है और इथेन में बॉटम में 99% जो है वो इथेन है। तो दिस 100% सेपरेशन। ये जो सेपरेशन है वो 100% हो रही है। और आप इसमें अगर कोई और प्रॉपर्टी देखना चाहें तो यू कैन एड फ्रॉम दिस। इस ट्यूटोरियल में यहाँ पर जो है ना वो ये मेहनत कर रहा है, ये सारी चीज़ें ऐड कर रहा है वन बाय वन। और हमें जो है ना, मैंने इसने क्या क्या ऐड किया, कंपोजिशन ऑफ मास फ्लो, कंपोनेंट मास फ्लेक्शन और मास फ्लो, ये ऐड करके और ये हमें रिजल्ट दिखा रहा है। लेकिन हमने ये जो रिजल्ट्स हैं वो उन्होंने इस दफ़ा दे दिए हैं। तो ये दिखा रहा है कि हमारे इथेन और इथाइलिन जो है ना 99% अपने अपनी जगहों पर निकल रही हैं। यानी कि इथेन साइड पर इथेन 99% है और इथाइलिन स्ट्रीम में इथाइलिन जो है वो खुद 99.9% है। और इसका मास फ्लो जो है ना वो ये दिखा रहा है, जो कि आपको जो जो रिक्वायर्ड था। Now, what is another thing? Another thing is which is very much interesting. You can go in a profiles. आपको ये सारे profiles मौजूद हैं। और यहाँ पर आप जिस चीज़ का ग्राफ बनाना चाहें यू कैन डेवलप योर ग्राफ। लाइक अगर मुझे अक्सर जो ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है डिस्टिलेशन में, कंपोजिशंस का ग्राफ होता है। तो आपने कंपोजिशन इथेन और इथैलिन की ले लेनी है और आपने इसको ओके कर लेना है। तो आप देखेंगे कि वी हैव लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन, लिक्विड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन, इस तरह का ग्राफ बन रहा है। बट यू कैन डेवलप आल्सो इन अ वेपर फॉर्म। ये आपको ग्राफ बना ये बनवा रहा है कदा। टेम्परेचर प्रोफाइल अगर आप देखना चाहें, टेम्परेचर प्रोफाइल, आप प्रोफाइल में गए, यू कैन क्लिक ऑन द पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ द कॉलम वन। ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज नंबर ऑफ Excuse me, इंटीजर। sir. जी जी जी। Hello, जी जी फराज साहब। sir. This is Dr. Abdul Fatah Sumro. जी 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 सर, एक तो पहली तो एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं अटेंड नहीं कर सका हूँ आपका ये जी पूरा कोर्स ऑनलाइन में, इसके बिजी स्केड्यूल में था, जी जी ट्रैवलिंग में और इधर उधर। तो सर मेरा राइट एक राइट। क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्या हम पॉसिबल है कि ये स्टेजेस की जगह पे यहाँ पे टाइम आ जाए और यहाँ पे हमारे पास वो क्या कहते हैं, टेम्परेचर की जगह पे हमारे पास कंपोजिशन आ जाए, जो जी जी आउटपुट कंपोजिशन हैं वो। जी। हाँ, ये फंडामेंटल जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब ये है कि टाइम आएगा इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में। वो इस तरह आएगा कि ये अभी जो भी काम हो रहा है वो स्टेडी स्टेट उस पर हो रहा है, मोड पर हो रहा है।
जब हम जो है ना वो स्टेडी स्टेट से हम इसको मूव होंगे, जो जो आपके एक मॉड्यूल है डायनामिक्स का मॉड्यूल, तो जब हम डायनामिक्स करेंगे तो फिर उसमें आपके जो जितने भी कर्व्स होंगे वो टाइम बेस्ड बनेंगे कि किस ओके, टाइम पर। हाँ, CSTR पे। ये तो ट्यूटोरियल्स जो करेंगे करेंगे, लेकिन उसमें जो भी काम यानी कि आप बेसिक बात समझें। जी जी। ये जो डिस्टिलेशन कॉलम है ना, इस वक्त ये समझ लें कि एक इंडस्ट्री में चल रहा है और उसमें कोई भी टाइम के हिसाब से वेरिएशन नहीं आ रही। अब अगर ये चल रहा है तो हर स्टेज पर, या आप ये तो कह सकते हैं कि हर जगह पर क्या कंपोजिशन चेंज या टेम्परेचर की चेंज आ रही है। जैसे ये बता रहा है कि एक स्टेज में, ऊपर वाले स्टेज में -26 डिग्री सेंटीग्रेड है और बिल्कुल बॉटम में -4 है। बॉयलर जो है ना वो -4 से मैंने इसको हीट करके -4 तक लेकर आ रहा है। तो ये टेम्परेचर प्रोफाइल है हर स्टेज की। ये तो हो हम्म। रहा है, लेकिन ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा इस वक्त। ओके, ठीक है, गॉट तो इट। ये हम ये सारे काम कर रहे हैं, ये हम जो है ना वो उस पर कर रहे हैं। जब हम डायनामिक्स में जाएंगे, या आप टॉप पर एक डायनामिक मोड होगा, इसको हम जब एक्टिव करेंगे तो हम ये लेंगे। और ये डायनामिक जो है हमारा आखिरी, वैसे भी आखिरी मॉड्यूल होगा, और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। उस डायनामिक मॉड्यूल में जाने से पहले हमें स्टेडी स्टेट मॉड्यूल कन्वर्ज करना पड़ता है। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो अभी हम सर ये मगर सारे। मैं, जी जी जी। जी, यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ कि जो मेरा ग्रुप है ना, यहाँ ये स्टूडेंट्स हैं और मैं खुद हूँ, तो जी हम, जी। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम हम्म। केमिकल बैकग्राउंड से नहीं है, एनवायरमेंट बैकग्राउंड से है ना। सही सही तो सही। हमारा जो मेन फोकस था इस कोर्स में आने के लिए वो था बायोगैस से अपग्रेडेशन है ना, वो ठीक है डिफरेंट ठीक है। सॉल्यूशंस डालकर और इस तरीके से ना। हम्म। तो काइंडली आप उसी को टच करें क्लास में ना, जब वो डायनामिक्स में CSTR पे आ जाए, अगर डायनामिक्स में पॉसिबल है। करेंगे। डायनामिक्स में करेंगे ये तब सारे काम तब हो सकेंगे जब हम जो है ना वो ये रिएक्शन भी कर लें, और हमने थर्मोडायनामिक्स कर लिया, और हम जो है ना वो डिजाइन पर करें। अच्छा, डायनामिक्स में तो हम डायनामिक्स चीजें सीखेंगे। एक हम्म। दूसरे जैसे डिजाइन है, इसमें बड़े बड़े हैं, हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। एक आधा इसका ट्यूटोरियल करें, और एक आधा जो है ना, यानी कि ये डिजाइन मीन्स केस स्टडीज हैं, तो हम एक आधा जो है ना वो ये चीज करें, और एक आधा जो है ना वो आप वाली जो रिक्वायरमेंट है वो। अब मुझे पता है, आपने मुझे शुरू शुरू में बताया था, तो मैंने कहा था कि ये जब हम एंड में जाकर केस स्टडीज करेंगे, तो हम मिसाल तो ये 2 हफ्ते जो है ना वो हमारे इस डिस्टिलेशन वाले पर लगेंगे, आज कल और अगले जो दिन है। उसके बाद जो है ना वो हम मटेरियल बैलेंस बैलेंस, ये तो एक दिन का काम है। उसके बाद हम जो है ना वो डायनामिक्स शुरू करेंगे। डायनामिक्स के साथ साथ जब हम डायनामिक्स समझ लेंगे, तो हम जो एंड में केस स्टडीज करेंगे, बड़े बड़े ये सिमुलेशंस बनेगी, पूरे पूरे लूप्स बनेंगे। तो उसमें हम जो है ना वो कोशिश करेंगे कि ये आपका ये जो एस्पेक्ट है वो कवर हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ओके। सो नाइस। अच्छा, ये जब हम आज आप होपफुली वीडियो देखेंगे, जब हम आज हमने ये काम शुरू किया, तो मैंने इसी एस्पेक्ट से सोचा था कि आप जो हैं वो नॉन केमिकल इंजीनियरिंग से आए हैं, मैंने कि केमिकल इंजीनियर बेसिकली आपकी डिग्री नहीं है। तो मैंने ये समझाया था कि क्योंकि हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में सेपरेशंस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, और सेपरेशन ऑफ होमोजेनस फेजेस इज नॉट पॉसिबल विद मैकेनिकल मीन्स। तो बहुत सारे हमारे ऑपरेशंस होते हैं। Distillation column is a fundamental and bigger operation. Distillation या फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम की फिर मैंने थोड़ी नो हाउ दी थी कि वी हैव अ कॉलम, वी हैव अ फीड स्ट्रीम, वी हैव अ नंबर ऑफ स्टेजेस, एंड उसमें यूजुअली हमारे पास 2 आउटपुट होते हैं। लेकिन ये लाजमी नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनेटिंग है तो आप बीच में, जैसे रिफाइनरी होती है तो वो नेफ्था वेफ्था केरोसिन, उसके अलग अलग कट्स होते हैं। बहरहाल बुनियादी काम ये होता है कि कहीं से भी आप वेपर्स आउट करो, उसको कंडेंस करो, उसका कुछ पोर्शन जो है ना वो आप फेड बैक कर लो, जिसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं, और कुछ पोर्शन एज ए प्रोडक्ट ले लो। और नीचे से जो है वो आप लिक्विड लेके उसको थोड़ा और ज़्यादा हीट करो, ताकि उसके वेपर्स बने, और वो वेपर्स आप इंजेक्ट कर लो। डिस्टिलेशन कॉलम में 2 फ्लोज होते हैं। टॉप टू बॉटम लिक्विड आ रहा होता है, और बॉटम टू अप वेपर्स आ रहे होते हैं। हर स्टेज पर इनका मीटअप होता है, और कोशिश ये होती है हर स्टेज की डिजाइन करते वक्त कि इनका मीटअप अच्छे से हो। तो जो लिक्विड ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर उसमें कोई हाई वोलेटाइल सब्सटेंस है, जैसे इथैलीन इस हमारे वाले केस में था, तो वो वेपराइज हो जाए और वो वेपर के साथ जुड़ जाए। और वेपर जो ऊपर जा रहा होता है वो हर स्टेज पर मिलके लिक्विड से, उसमें अगर लो वोलेटाइल या हेवी कंपोनेंट है, जैसे इथेन था, वो वापस कंडेंस होके उस लिक्विड में शामिल हो जाए। We have a equilibrium in on each stage.
जब हमारा स्ट्रीम दोनों स्ट्रीम्स किसी स्टेज पर पहुंच रही होती हैं तो वो अनइक्विलिब्रियम में होती हैं, बट व्हेन दे आर लीविंग दे आर इन इक्विलिब्रियम। उस स्टेज पर उससे ज्यादा सफाई नहीं हो सकती, सेपरेशन नहीं हो सकती, तो इसलिए हम दूसरी स्टेज पर चले जाते हैं जहां पर फिर अनइक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशंस। तो फिर वो थर्मोडायनेमिकली अनइक्विलिब्रियम होते हैं। इस तरह ये सेपरेशन होती जाती है, वेपर इनरिच होता जाता है इन टर्म्स ऑफ हाई वोलेटाइल कंपोनेंट, और लिक्विड इनरिच होता जाता है इन टर्म्स ऑफ लो वोलेटाइल कंपोनेंट। तो ये नीचे से निकल आते हैं। तो ये हमने थोड़ी डिस्कस की थी, इसके बाद हमने ये काम शुरू किया। वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन इन दिस सेपरेशन कॉलम्स में। एक कॉलम्स की कैटेगरी में बहुत सारे कॉलम्स हैं, लेकिन आप मोस्टली आप देखेंगे मोस्ट ट्यूटोरियल्स में को ये रेड फ्रैक ही मिलेगा जो कि एप्लीकेबल है। तो रेड फ्रैक जो है ना वो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। बहरहाल एक आधे ट्यूटोरियल्स कुछ एक दो चीज़ों को टच करेंगे। और इसमें जो है ना वो सिर्फ ऑप्शन आपके पास सिर्फ दो आउटपुट्स के हैं, लेकिन ये पेट्रो फ्रैक्शन में जो है ना वो आपके मल्टीपल आउटपुट्स आते हैं। इसी तरह हर एक इस टूल की अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी होगी। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन ये रेड फ्रैक इज वेरी फेमस। रेड रिगोरस एब्जॉर्प्शन डिस्टिलेशन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। यही कॉलम जो है वो आपका एब्जॉर्प्शन का काम भी करेगा, यानी कि एब्जॉर्बर यहाँ पर अलग से नहीं है, यही आपका एब्जॉर्प्शन भी है। सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया। और आपने ये देखा कि ये कॉलम जो है वो कर सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूजन। The 125 stage column was able to extract the specification of 99% ethylene with 5 million pound per day। 5 निकल रहा है, यस। देखें आप इसके अगर रिजल्ट्स में जाएंगे, सॉरी रिजल्ट्स स्ट्रीम में जाएंगे, तो यू हैवंट नोटिस्ड कि आपके पास जो मास फ्लो है इसका वो है 5। इथाइलिन जो है ना वो 5 निकल रही है। जब 7.3 मिलियन पाउंड पर आवर वो आ रहा था, तो 5 जो है ना वो उनको चाहिए था आउटपुट एज एन आउटपुट। So viral as well as the bottoms have this one. So it could be concluded that the column is capable of completing the desired separation. ASPEN Plus allows engineers to model existing equipment and see if it is possible to repropose it, or otherwise design new equipment that would be meet very specific criteria. अब मैंने कर लिया और आपने देख लिया वेरी स्ट्रेट अवे। नाउ आई थिंक यू नीड टू प्रैक्टिस दिस फर्स्ट to before we will go on the to the other module. So yes, the house is open for question answer, and if you have any issue with this, yes. जी काशिफ साहब, इस्माइल अगर सुन रहे हैं, कयूम अभी आए थे लेट। अगर हम यही काम सिर्फ डिस्टिलेशन कॉलम में कर रहे हैं, इज दैट पॉसिबल? डिस्टिलेशन कॉलम कौन सा डिस्टिलेशन मतलब है ये? रैड फ्रैक की जगह हम सिर्फ डिस्टिलेशन चूज करते हैं, बिकॉज इसमें पर्टिकुलरली तो कुछ ऐसा नहीं हुआ जो रैड फ्रैक यस, से रिलेवेंट। क्वाइट पॉसिबल। मैं आप इसको देखें, इसमें जो है ना वो ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शंस हैं। लेकिन ये जो डिस्टिलेशन, हाँ ये जो डिस्टिलेशन ऑप्शन है, ये आप आगे अभी हम बताएंगे इसी कल तक ये ट्यूटोरियल आ जाएगा, तीसरा या चौथा है वो बताएगा। जैसे अभी आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए दिमाग में कि अभी तो हमने एक जब इसको कॉलम को कन्वर्ज किया इस ब्लॉक इसकी स्पेसिफिकेशन में, तो हमने ये 125 स्टेजेस दी। अभी सवाल ये है कि 125 स्टेजेस जो है ना वो देना लाजमी है क्वेश्चन। तो हम कोई और काम भी तो कर सकते हैं, मैंने इसके चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये शॉर्टकट डिस्टिलेशन है। ये आपको यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस करके और आप कन्वर्जेंस देखते हो, ये देखें इसमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहा, और आपको क्विक एक आंसर दे देगा जो कि जिसमें आपकी एनर्जी वगैरह भी कैलकुलेट नहीं होगी, और आप बता पाओगे कि पॉसिबल है या नहीं। हर एक कॉलम की एक अपनी वर्थ है। इस रेड फ्रैक में इसके रेड फ्रैक में जो है ना वो आपसे चीजें भी ज्यादा पूछ रहा है, और जब ये पूछने के बाद ये जब जवाब दे रहा है तो आपके पास जवाबात भी बहुत हैं। मैंने इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो भी वो मतलूबा रिजल्ट्स हैं। लेकिन ये है शॉर्टकट डिस्टिलेशन। शॉर्टकट डिस्टिलेशन हमेशा FUG एक मेथड होता है। 3 ये बंदों के नाम हैं। एफ से
फ्रेंडलिच, और यू से अंडरवुड, और जी से ग्रेफ शॉप, पता नहीं किस तरह इस तरह नाम है उसका। एक मेथड है, जैसे मिकेप मेथड है, इसी तरह ये तीन बंदों का नाम है और उसका मेथड है। वो बताते हैं नंबर ऑफ स्टेजेस कितने हों और कैसे, ये भी हम करेंगे। ये आपका शॉर्टकट डिस्टिलेशन है। जी। तो आप सब लोग जो बैठे हो, कहीं तव्हां वेठा हो न? यस सर, ऐं हिते आहियां। तो तव्हां जो हाणे हले थो सॉफ्टवेयर? सर अञा इंस्टॉल ई कोन कयो आहे। माशाल्लाह, पोइ हाणे माइक बंद कर बस। ओके, मोहम्मद इस्माइल बुअर साहब जी, क्या आपका सवाल है? कि फ्लो शीट में मुझे मसला होता है ना, जी जब मैंने बताएं। ब्लॉक बनाया तो उसमें स्ट्रीम ऐड करता हूँ ना, तो उसमें वो रिपीटेशन हो जाती है, कभी अनसेलेक्ट नहीं होता, या ये होता है कि एक स्ट्रीम दो दफ़ा ऐड हो जाती है, उसमें मसला होता है। हाँ और जब आप इनपुट कंडीशन डाल रहे हैं ना, जैसे नेक्स्ट हाँ स्ट्रीम है या ब्लॉक की जो कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मतलब समझने में हाँ, दिक्कत है। सही है। ये अच्छी बात है। ये जो न्यू यूजर्स होते हैं उनके लिए ये बड़ा इशू होता है। देखें, यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस नजर आ रहा है। वी हैव लेफ्ट साइड वन, वी हैव अ ट्री, जिसमें हर चीज जो आप एक्सेस कर सकते हो, वो ऑप्शंस मौजूद हैं, और एक आपके पास फ्लो डायग्राम बनाने के लिए स्पेस मौजूद है। मिसाल तौर मुझे इस फीड स्ट्रीम का डेटा इंसर्ट, पहले मैं डेटा की तरफ आता हूँ। मुझे डेटा इंसर्ट करना है फीड स्ट्रीम का। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस स्ट्रीम के, देखें इस स्ट्रीम के बहुत सारे हिस्से हैं। एक इस स्ट्रीम का हिस्सा है ये नाम वाला। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो मैं इसके नाम को चेंज करने के मोड में चला जाऊंगा। टेक्स्ट, इसको फीड में नाम, अब मैं देखें ये हाईलाइट हो गया है, अब मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसके पहले वाले हिस्से को डबल क्लिक करूंगा, ये जो जहां पर तीर, मोटा तीर बना हुआ है, तो मैं इसके, ये अब जो मैं इसके जो इनपुट है ना, मैं अगर कहीं और जाकर कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं उस मोड में आ गया। मुझे फीड की डेटा इंसर्ट करनी है तो हाइसिस में तो कहीं भी डबल क्लिक करने वो आ जाता है। यहां पर इस लाइन पर डबल क्लिक करने से आप उसके डेटा को इनपुट करने के मोड में चले जाओगे। या आप इस इतने इतने खजल खुआरी में पड़ो ही ना, आप स्ट्रीम्स को क्लिक करो और वहां पर जो मतलूबा स्ट्रीम का नाम नजर आ रहा है जैसे फीड है, आप इसको और इसके ट्री को ओपन करो, इसमें इनपुट में चले जाओ, तो भी आप उसी जगह पर पहुंचोगे जो उधर डबल क्लिक करने पर पहुंचोगे। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप ब्लॉक को डबल क्लिक करोगे तो आप ब्लॉक के उस ब्लॉक, पर्टिकुलर ब्लॉक के इनपुट कंपोजिशन पर पहुंच जाओगे। या तो आप यहाँ से ब्लॉक्स में, आपने कोई नहीं चूज नहीं किया, यहाँ पर डबल क्लिक नहीं किया, आप ब्लॉक्स को खोलो, जो भी ब्लॉक है आप उसकी स्पेसिफिकेशन में चले जाओ, तो आप वही उसी पैनल पर पहुंच जाओगे। तो ये तो आप एंट्री कैसे आप पहुंचते हो, आप एक ये ट्री वाला मेथड यूज कर सकते हो और आप एक तरफ जो है ना ये फ्लो डायग्राम का वो यूज कर सकते हो। दूसरा बात ये, मैंने ये बहुत पहले बताया था, मिसाल तौर में कोई भी चीज़ यहाँ से, चाहे कॉलम्स, चाहे ऑपरेशंस की, या चाहे स्ट्रीम्स की, मैं कोई चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल तो मैंने ये मिक्सर सेलेक्ट किया। अब मेरे माउस पर जो है ना वो मिक्सर आ गया है, ये देखें प्लस साइन शो कर रहा है कि आप जहां भी क्लिक करेंगे वहां पर ये मिक्सर है। आप एक दफा आपने क्लिक किया, चलो आप, आपने उसको कोई नाम दे दिया, फिर प्लस है, फिर क्लिक किया, फिर ये जो चलता आ जाएगा। तो आप इस प्लस से कैसे जान छुड़ाते हो? या तो आप इसको दोबारा उधर ही क्लिक करो तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। वैसे बेहतर तरीका ये है कि आप इसको राइट क्लिक करोगे तो आपका माउस जो है वो नॉर्मल हालत में आ जाएगा, प्लस वाला साइन जो है खत्म हो जाएगा। अब आपके माउस पर कोई भी चीज़ नहीं है, यू कैन क्लिक एट एनी पे। ठीक है। तो इसी तरह स्ट्रीम्स हैं। मिसाल तो मैं एक स्ट्रीम मिला रहा हूँ, तो फिर मैंने उसका कोई नाम रखा, फिर मेरे हाथ में स्ट्रीम है, तो मैं कहीं भी क्लिक करूँ, मेरे जहन में ये था कि मैंने तो स्ट्रीम बना ली थी, अरे यार ये तो दूसरी स्ट्रीम बन गई। अब ये स्ट्रीम कभी भी हमारे हाथ से नहीं निकलेगी। या तो इसको दोबारा क्लिक करें, अनसेलेक्ट करें, या आप इसको एस्केप को दबाएं, सॉरी, या आप इसको राइट क्लिक को आप क्लिक करें। बेहतर जो बहुत हम वो हैं, यूजुअल हैं, हम जो है ना इसको क्लिक करते हैं, तो हम छुड़ाने के लिए इस एरो को भी क्लिक करेंगे तो ये छुट जाएगा। देखें अब हम, हमारा माउस नॉर्मल हो गया, लेकिन हम इधर नहीं आते क्योंकि हम बड़े फ्रीक्वेंट काम कर रहे होते हैं और ये हमें एक इरिटेट कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो हम जो है ना वो चल रहे हैं।
अच्छा, ये तो हो गई कि मल्टीपल, ये जो आप कैसे इससे जान छुड़ाते हो, माना सेलेक्ट डिसेलेक्ट कैसे करते हो। अच्छा, अब स्ट्रीम डालने का जो तरीका है वो ये है, मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे है, ऐसे ही हम इसको कहते हैं कि मिसाल तो जैसे ही आप स्ट्रीम लेकर आओगे इधर फ्लो डायग्राम में आओगे, तो जितने भी यूनिट ऑपरेशन पड़े होंगे, देखें मैं अभी माउस को, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इस फ्लो डायग्राम पर होवर कर रहा हूँ। आप देखोगे कि जितने भी यूनिट ऑपरेशन पड़े हुए हैं, इसमें मैंने दो तीन और रख लेने हैं साथ, तो ऐसे ही मैं रख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि ये मैं कुछ और भी रख रहा हूँ ताकि आपको मैं चीज दिखा। अब मैं मटेरियल स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहा हूँ। मटेरियल स्ट्रीम जैसे मैं इधर आया, देखें जो जो यूनिट ऑपरेशंस वेले पड़े हुए हैं, वेले पड़े होने का मतलब ये है कि वो फ्री हैं, उनमें अभी कोई भी स्ट्रीम्स नहीं लगी हैं, और जितनी उनमें स्ट्रीम्स लग सकती हैं वो ये दिखाएगा। रेड कलर का मतलब होता है स्ट्रीम इस सॉफ्टवेयर की जबान में। अब ये जैसे ही मैंने स्ट्रीम क्लिक की हुई है और मेरे माउस के पॉइंटर पर अब स्ट्रीम का सिंबल है कि मैं कहीं भी लगाऊं, तो ये बता रहा है, ये ऑपरेशन बता रहा है कि इसको तीन स्ट्रीम कनेक्ट की जा सकती हैं। एक फीड स्ट्रीम, फीड स्ट्रीम कनेक्ट करने का तरीका ये होगा कि आपका जो एंड वाला सिरा है जिस पर एरो लगता है वो जाकर इस रेड वाले से मिले। और दो आउटपुट हैं, आउटपुट का मतलब है कि जो स्टार्टिंग वाला जो एरो है, यानी कि स्टार्टिंग जहां से कर रहे हैं वो क्लिक यहाँ पर होनी चाहिए। इसी तरह ये साइक्लोन सेपरेट, इसी तरह ये जो मिक्सर है। तो हम करते क्या है, हम अगर मुझे कोई इनपुट स्ट्रीम देनी है किसी यूनिट ऑपरेशन में, तो इनपुट स्ट्रीम देने का तरीका ये होगा कि हम पहले कहीं, हमारे पास स्ट्रीम क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं कहीं क्लिक करूं, ठीक है ना, वो क्लिक अगर फ्री स्पेस पर होगी, फ्लो डायग्राम में कहीं भी कोई चीज नहीं होगी, तो इसका मतलब है हमने इसकी इनपुट तो कर लिया, यहां से वो लाइन बनना शुरू हो जाएगी। अब हम ये जो हमारे हाथ में है कि हम दूसरी क्लिक कहाँ कर रहे हैं, अगर किसी यूनिट ऑपरेशंस के इनपुट वाली जगह पर देखें, जब हम उसके करीब आते हैं रेड कलर के, तो ये एक इशारा देता है, एक तो उसका टूल टिप बताता है, दूसरा उसका जो है ना वो माउस में हरकत आ जाती है, और देखें वो ब्लू कलर, जो रेड कलर वाली चीज थी उसके हल्का ब्लू कलर का निशान मिल जाता है। अगर आपने इधर क्लिक किया प्रॉपरली तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप नाम दे दो, ठीक है ना, तो आप ये देखते हो कि ये कनेक्ट हो गया। लेकिन अगर आपने थोड़ा आपको डर लग रहा है, मिसाल तो मैं दूसरे यूनिट ऑपरेशन करके दिखाता हूँ, मिसाल मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहता, मैंने यहाँ दिया और मैंने इससे थोड़ा दूर क्लिक किया। दूर जब हम क्लिक करेंगे तो वो देखें, ये उसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, ये अलग है और ये स्ट्रीम अलग पड़ी हुई है। अब इसका हल ये है, इसके कुछ हल हैं इसके। अब जो एंड बनाना है, इसका इनपुट मिलाना है या इसका आउटपुट मिलाना है। अब ये अगर फीड स्ट्रीम बनानी है तो मैं इसके आउटपुट को डबल क्लिक करूंगा, दोबारा मेरे हाथ में आ जाएगा। इसको किसी के साथ लिंक अप करने के लिए तो हम इसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो ये उसके साथ मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी स्ट्रीम का कोई को आउटपुट बनाना है किसी ऑपरेशन का, मिसाल साइक्लोन का मुझे ये स्ट्रीम टू जो बनी हुई है इसका आउटपुट बनाना है, तो मैं इसके इनपुट वाले को क्लिक करूंगा तो आउटपुट देखें, जहां जहां आउटपुट के ऑप्शन हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। मैंने इसको इसके ऊपर जाकर क्लिक किया, तो दिस इज हाउ वी कैन ज्वाइन द स्ट्रीम्स एंड दिस एंड दैट। होपफुली यू गॉट द some quick review. Yes, yes, thank you. Okay. So, should we or shall just discuss the another the tutorial? ठीक है साहब। I think it's enough for today. हाँ, चले एक काम करते हैं, आज बंदे भी चाह रहे हैं। आप मैंने सारे ट्यूटोरियल्स आपको दे दिए हैं, आप इन ट्यूटोरियल्स में से पहला ट्यूटोरियल करने की कोशिश करें, और दूसरे लोग जो आज वीडियो देखेंगे वो भी करेंगे, तो हम कल जो है ना इसको सेकंड ट्यूटोरियल भी करेंगे, कुछ और बातें भी इसमें करेंगे। इज दैट ओके इस्माइल? Yes, yes, okay. चलें ठीक है, फिर हम इधर ही स्टॉप करते हैं।